Hi there, I am Vakar Kiani and welcome to my channel English Hard Learning. Today we are going to discuss direct and indirect speech. So first we're going to see what is a difference between direct and indirect speech. So we are going to discuss first direct speech. When you report someone else's statement using actual and exact words without any change, we call it direct speech. जब हम किसी के कहे हुए अल्फाज बगैर किसी तब्दीली के बयान करते हैं तो हम ऐसी स्पीच को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अकरम सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल. अकरम ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है. अब आपने देखा कि जब हमने इस सेंटेंस को बयान किया तो हमने अकरम के एग्जैक्ट वर्ड मेरी तबीयत ठीक नहीं है वैसे ही इस्तेमाल किया और इन अल्फाज को हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगाया है. नाउ इनडायरेक्ट स्पीच, व्हेन यू रिपोर्ट समवन एल्स स्टेटमेंट इन योर वर्ड्स विदाउट एनी चेंज इन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, वी कॉल इट इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम किसी के कहे हुए अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान करते हैं लेकिन उसके मतन में, उसके मीनिंग में कोई तब्दीली ना आए तो हम ऐसी स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अकरम सेड दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल. तो आपने देखा कि डायरेक्ट स्पीच से हमने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है. अब यहाँ से हमने वर्ड्स को क्या किया है, अपने अल्फाज में तब्दील कर दिया है. अकरम ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी. नाउ वी आर गोइंग टू सी सम मोर एग्जांपल्स. ही सेज आई एम अ बिट नर्वस. उसने कहा कि मैं कुछ परेशान हूं. जब हमने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील किया तो सेंटेंस चेंज हो जाता है. शी सेज दैट शी इज अ बिट नर्वस, कि उसने कहा कि वो कहती है कि वो कुछ परेशान है. ही सेज आई एम अ डॉक्टर. वो कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूं. अब जब हमने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो ही सेज दैट ही इज अ डॉक्टर. वो कहता है कि वो डॉक्टर है. हैदर सेड आई एम इल. हैदर ने कहा कि मैं बीमार हूं. जब हमने इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज किया तो हैदर सेड दैट ही वॉज इल. हैदर ने कहा कि वो बीमार था. अब आपने देखा कि हमने कुछ अल्फाज की चेंजिंग की है और कुछ टेंसेस की चेंजिंग की है. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे तब्दील किया जाता है, इससे पहले हम कुछ चीज़ें देखेंगे. तो फर्स्ट वी नीड टू सी व्हाट इज आ रिपोर्टिंग स्पीच एंड व्हाट इज आ रिपोर्टेड स्पीच. Now let's see, we have an example and the example is, you said to me I shall visit Paris next week. तुमने मुझसे कहा कि मैं पेरिस का अगले हफ्ते विजिट करूंगा या करूंगी. Now in this sentence you can see we have two parts. So the first part, outside inverted commas, is called reporting speech, like you said to me. And the another part which is within inverted commas, so we call it reported speech. So in this sentence, you said to me is a reporting speech and I shall visit Paris next week is a reported speech. Before going to learn how to change direct speech into indirect speech, we need to go through this chart and it is very important to learn this chart. ये हमारे प्रोनाउन का चार्ट है. ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे सीखें और हमें पता होना चाहिए which one is first person pronoun. So first person pronoun is I, me, my, we, us and our. The second person pronoun is you, yours. The third person pronoun, it, its, he, him, his.
she, her एंड इसका जो प्लूरल है वो they, them and their है. Now we are going to see how we need to change the direct speech into indirect speech. So first we need to change the pronouns. How we need to change the pronouns? You have already seen the chart which we have discussed in the last slide. So the first rule will be first person pronoun of reported speech will be changed according to the subject of reporting speech. सो हमने पहले देखा कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है. तो यहाँ पे आई, वी, माई, अवर, मी, अस एंड माइन आर first person pronouns. So what we gonna do? So now we have two speeches here. So she says हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है. I can cook very well. तो ये रिपोर्टेड स्पीच है. What we need to do here, we have I is a first person pronoun and the first person pronoun will change according to the subject of the reporting speech. तो यहाँ पे I she के लिहाज से चेंज होगा और हम चेंजिंग क्या करेंगे. She says that she can cook very well. तो यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे और उसकी जगह हम वर्ड यूज करेंगे that. In the second rule, second person pronoun of reported speech will be changed according to the object of reporting speech. Now in this sentence, we have the word you and this is second person pronoun. And the second person pronoun will change according to the object of reporting speech. तो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मी है. So that's why अब यहाँ से कोमा हटाएंगे तो we will use a word that. तो he tells me that I do my work nicely. तो यहाँ पे you I में चेंज हो गया और your my में चेंज हो गया क्योंकि हमने क्या किया कि हमने सेकंड पर्सन प्रोनाउन को अपने ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज किया. Now we have the third rule. In third rule, third person pronoun of reporting speech will not be changed. अगर हमारे पास ऐसे अल्फाज like he, she, it, they, if there is any name, his, her, their, him or them आते हैं, so we will not make any change in pronouns. So you can see here we have a word they and they is a third person pronoun. So we will not make any change in reported speech. So the teacher says that they are very good students. Now after making some changes in pronouns, we are going to see some changing in tenses as well. Why we make change in tenses? If our reporting speech is in past. So अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में आती है तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच में भी टेंस की चेंजिंग करेंगे. She said, I am cooking food. So she said that. So सबसे पहले हमने inverted commas हटाने हैं और उसकी जगह word that को लगाना है. Now the next thing we have pronoun and the pronoun is I and we will change according to the subject of reporting speech and that will change into she. Next क्योंकि हमारी reporting speech past में है तो फिर हम tenses की changing करेंगे और हमारे पास जो word am है will change into was. In the second sentence, they said to me, you have not completed your work. तो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो
पास्ट में। तो फिर हम इसमें टेंसेस की चेंजिंग करेंगे। तो चेंजिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम दे टोल्ड मी दैट, तो हमने इन्वर्टेड कोमास को हटाया और उसकी जगह वर्ड दैट लगा दिया। नाउ वी हैव सीन वी हैव सेकंड पर्सन प्रोनाउन हियर, एंड द सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो उसके लिहाज से इट विल चेंज इनटू आई। नाउ वी हैव टू मेक सम चेंजेस इन टेंसेस एज वेल। तो यहाँ पे वर्ड हैव है, एंड हैव चेंज इनटू हैड। नेक्स्ट वी हैव द वर्ड योर। तो यहाँ पे ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच एंड विल चेंज इनटू माय। Now we have a chart how we need to make changing of tenses. Here, if we have do and does, it will change into did. If we have is, am, are, will change into was and were. If we have will and shall, will change into would. Has and have will change into had. Was and were change into had been. If we have second form of the verb, that will change into had plus third form of verb. If we have the word did, it will change into had plus third form of verb. If we have a first form of verb in a present definite tense, it will change into second form of the verb of past indefinite. If we have the word can, will change into could, may will change into might. With changing of tenses, we also make some changing in vocabulary as well. Like if we have the word now in direct speech, it will change into then in indirect speech. Here will change into there, this will change into that, these will change into those, thus will change into so, ago will change into before, today will change into that day, tonight will change into that night, yesterday will change into previous day, tomorrow will change into the next day, the last night will change into previous night. So now we are going to see some more examples. The first example we have, that is Sana said, I am very busy now. So we can see that a reporting speech is in past tense. So now first we're going to do the inverted commas will change into that. The next one we have I, and I is a first person pronoun, and the first person pronoun will change according to the subject of reporting speech. So the I will change into she. The next we have am, and am is in our present tense and will change into past tense. So am will replace by was. Now the next thing we have to change, that is now will change into then. In the second sentence, my brother said, I met John yesterday. So here we can see that the reporting speech is in past tense. So the first change we're going to make of that. The second thing is I, and I is a first person pronoun and it will change according to the subject of reporting speech. The next one is met, and met is the second form of meet. So the second form will change into had plus third form. And now the yesterday will change into previous day. In the third sentence, Akram said, Rimsha doesn't like these books. So we can see that our reporting speech is in past tense. So the first thing we're going to change, that is inverted commas will change into that. Rimsha is a name, so this is the third person pronoun. So that's why we will not make any change of pronoun. So Rimsha will remain as Rimsha.
The next thing that is doesn't. So because this is the present tense, so this will change into past tense, and the doesn't will change into didn't. And the next thing, these will change into those. So the sentence will be Akram said that Rimsha didn't like those books. That's the end of our lecture. So subscribe my channel for more videos on app updates. Thank you for watching my video.